Mohammad Yasin Malik will spend the rest of his life in jail. Some say the punishment handed out to him by an NIA court in Delhi is inadequate because it does not measure up to the scale and magnitude of the crimes he has committed and the trauma that he's inflicted on Indians. Wheels of justice has started moving. Hardcore terrorist Yasin Malik has been sent to place he belonged to for whole of his life. Now he's going to rot in jail for atrocities and brutal crimes he committed during the last 3 decades. Credit for this goes to zero tolerance policy adopted by Narendra Modi government. This government from day one ensured that now onwards there will be no incentivization of terror and there will be no premium on separatism. देखिए, न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और मानना भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के जो दरिंदों को जिन्होंने 30 साल में तबाही की है, इससे ज़्यादा सख्त सज़ा की ज़रूरत थी। और ख़ास करके बहुत से ऐसे केस पेंडिंग्स हैं। ये तो टेरर फंडिंग का मामला है, लेकिन जो अपहरण, हत्या, इस प्रकार के जो कई इन पर केस पेंडिंग, उसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी सख्त सज़ा इनको सुनाई जाएगी। उम्र कैद ठीक है, हुई आज उसको जेल में सड़ेगा जब तक उसको सड़ना होगा, लेकिन तसल्ली हमें तब मिलेगी। और हम डिमांड करते हैं, कश्मीरी पंडित डिमांड करते हैं जो इसके विक्टिम रहे इसके टेररिज्म के, कि यासिन मलिक को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। In my view, it's not justice. It's not based on justice. My experience is, it is neither hanging nor sentencing, life imprisonments and all that. It will not help to restore the credibility of any move of the government of India as far as Kashmir is concerned. And it will create more and more alienation. ये तो मैंने पहले भी कहा, एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसला कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मसला सुलझने के बजाय मसला उलझ रहा है। अदालत का हक है कि वो जो कार्रवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हैं, और जिसके बारे में फैसला सुनाया गया हो उसका भी हक है कि वो उससे ऊपर वाली अदालत में जाके उस फैसले को तब्दील करने की कोशिश करें। Yasin Malik is a separatist seeking the secession of Jammu and Kashmir from India. Malik rose to prominence among the separatist ranks in 1988 when the valley was on the boil and the Pakistan-sponsored movement for secession had acquired considerable momentum. Malik became the chief of the terror outfit Jammu and Kashmir Liberation Front in April 1990, a post he held until August that year when he was arrested. Once released, he crossed over into Pakistan-occupied Kashmir and was known to have received arms training before returning. He had been accompanied by Hamid Sheikh, Ishfaq Majid and Javed Mir, all of whom were among the set of separatists who contributed to the escalation of the insurgency in 1988-89. There are several cases lodged against Yasin Malik. The JKLF was responsible for the kidnapping of Rubaiya Saeed in 1989. She is the daughter of Mufti Muhammad Saeed, who was the then Union Home Minister. The government of India capitulated and released 5 terrorists of the JKLF who were lodged in different jails in exchange for Rubaiya. This capitulation emboldened separatists even further, giving more impetus to the insurgency in Jammu and Kashmir. In January last year, a court framed charges against Yasin Malik and 9 others in relation to this case. On the 25th of January 1990, terrorists in a car fired upon Indian Air Force personnel near Srinagar, killing 4, including squadron leader Ravi Khanna. Yasin Malik was booked, but it is only in the recent past that the trial has gained momentum. On March 16, 2020, more than 3 decades later, a special court in Jammu framed charges against Yasin Malik and 6 others in this case. He has pled not guilty in this matter and has called the charges fabricated. Yasin Malik is also accused in case involving murder of 4 Indian Air Force officials. Meanwhile, Kashmiri Hindus have filed petition
seeking probe against him for genocide. Will there be justice? Only time will tell. All I can say right now is that conviction of Yasin Malik has emboldened nationalistic forces in country and given big jolt to anti-India lobby. मेरे केस में इंसाफ होगा, जैसे 32 साल के बाद आज इंसाफ सारे देश को सुनने में मिला है कि आज उसको सज़ा मुकर्रर होगी और इसमें उसको सज़ा मिलेगी। तो 32 साल के बाद अगर सज़ा मिल सकती है तो मेरे केस की भी मुझे पूरी उम्मीद है। 32 साल अगर मैं खून के आंसू रोई हूँ तो अब मुझे लगता है कि मेरे आंसू पहुँचने का परमात्मा ने कोई तो समय लाया है कि मेरे भी आंसू पहुँचेंगे। बहुत दुख होता है ये बात सोच सोच के कि एक किलर उसको महात्मा गांधी का दर्जा दिया जाता है और एक जो देशभक्त देश की सेवा करने वाला उसको शहादत का दर्जा भी नहीं दिया जाता। मेरी उस परमात्मा की अदालत में जो 32 साल से गुजारिश रही है, खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। हमारे देश में लोगों को लोकतंत्र के कारण बड़ी आज़ादी, ये जनता तय करेगी कि कौन लोग क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे सर्वोच्च अदालत जनता की होती है और यहाँ कुछ भी बयान दिए जा सकते हैं, वो उनका व्यू होगा। मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स के ऑफिसर जिसकी मौत हुई थी उसकी माँ का बयान अगर आप पढ़ेंगी, उसके परिजनों का बयान आप पढ़ेंगी तो आपके आंखों से भी आंसू छलकेगा। निर्मल खन्ना जी ने बिल्कुल कहा था, खून का बदला खून। मुझे लगता है कि इन सब बातों का ये मानवीय संवेदना के विषय हैं। लोगों को कोई भी टिप्पणी करने से पहले ध्यान देना चाहिए। मौत का मैं मानता हूं कि कोई मुआवजा नहीं होता है, बट किसी की भी जान, उस जान से अमूल्य चीज कोई नहीं हो सकती और खास तौर से परिजन के लिए, किसी माँ के लिए तो इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता है। But here's the crime that Yasin Malik pled guilty to, and that is what he has been convicted for and sentenced to life for. Malik, along with several others, was booked by the NIA in 2017 over allegations of terror funding and fomenting unrest in the valley the year before, following the killing of Hizbul Mujahideen terrorist Burhan Wani in an encounter. Kashmir remained on the boil for several months after that, with incidents of stone pelting escalating manifold. These funds were raised allegedly with Pakistani support. In March 2019, the JKLF was banned by the central government. In April that year, Malik was arrested. The NIA court in Delhi framed charges against Malik and others this year on the 20th of March, and within 2 months, in early May, Malik had pled guilty to the charges against him. The National Investigative Agency alleged that separatists like Malik, in connivance with Hafiz Saeed, the mastermind of 2611 and based out of Pakistan, had sought, and I quote, to raise, receive and collect funds domestically and from abroad through various illegal channels, including Hawala, for funding separatist and terrorist activities in J&K, stop quote. The NIA went on to allege that the funds had been used to, and I quote, cause disruption in the Kashmir Valley by way of pelting stones on security forces, systematically burning schools, damaging public property, and waging war against India, stop quote. Once he confessed to these crimes, the conviction was a foregone conclusion, but all eyes were on the NIA court for the pronouncement of the sentence. And here's what the court said, and I quote, the crimes for which the convict has been convicted are of a very serious nature. These crimes were intended to strike at the heart of the idea of India and intended to forcefully secede J&K from the Union of India. The crime becomes more serious as it was committed with the assistance of foreign powers and designated terrorists. The seriousness of the crime is further increased by the fact that it was committed behind the smokescreen of an alleged peaceful political movement, stop quote. In his defense, in the hope of securing some leniency from the court, Yasin Malik had stated that he was a reformed man, that he had given up the gun in 1994, had even invoked the principles of non-violence. It must not be forgotten that for a long time Yasin Malik was recognized as a stakeholder in the peace process in Jammu and Kashmir, despite his separatism. In 2006, he personally met the Indian Prime Minister Manmohan Singh.
In 2000, when Atal Bihari Vajpayee was Prime Minister, the Ministry of External Affairs issued him a passport to travel overseas for medical treatment. On many occasions, members of political parties and even civil society gave him legitimacy by engaging in dialogue with him or providing him a platform to espouse his views. It's not as if they did not know about the crimes he'd been accused of in the 1990s. The NIA court was having none of it. It said, and I quote, "It may be correct that the convict may have given up the gun in the year 1994, but he had never expressed any regret for the violence he had committed prior to the year 1994. It is to be noticed that when he claimed to have given up the path of violence after the year 1994, the government of India took it upon its face value and gave him an opportunity to reform and in good faith tried to engage in meaningful dialogue with him and, as admitted by him, gave him every platform to express his opinion. However, as discussed in the order on charge, the convict did not desist from violence. Rather, betraying the good intention of government, he took a different path to orchestrate the violence in the guise of political struggle. The convict has claimed that he had followed Gandhian principle of non-violence and was spearheading a peaceful non-violent struggle. However, the evidence on the basis of which charges were framed and to which the convict has pleaded guilty speaks otherwise. The entire movement was planned to be a violent movement and large-scale violence ensued is a matter-of-fact stop quote. It is pertinent to note that the NIA did try to press upon the court the claim that Yasin Malik was very much involved in the atrocities inflicted upon the Hindu community in Jammu and Kashmir in the late 80s and the early 90s. The court, however, said that the matter had not been adjudicated upon, nor was that specific matter before this court. The specific charges brought forth against Yasin Malik in this case of terror funding did not merit capital punishment, but it was a serious enough crime to keep him behind bars for life, the court said. The implications of this judgment, though, are serious. For far too long, the separatists who have peddled Pakistan's agenda in India been elevated to the status of stakeholders in the valley. That should end. Many of their actions have involved serious criminality and they should be probed. Yasin Malik's agony is bound to pile up with two other cases that will continue to be heard against him. But this should not stop with Yasin Malik. एक फीलिंग है लोगों में कि कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 और उससे थोड़ा पहले से ही जिस तरह का व्यवहार हुआ, जिनोसाइड हुआ, यासीन मलिक शायद उनके चेहरे थे. सिर्फ वो नहीं, बिट्टा कराटे भी एक ऐसा चेहरा है. कई दूसरे चेहरे हैं इस पूरे आतंक के. मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सब का क्या होगा? क्या न्याय की जो घड़ी है वो इन सब को भी अपने नीचे लेगी और कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 32 सालों से कश्मीरी पंडित इंतजार में हैं. देखिए, एक दौर था जम्मू कश्मीर में जब ऐसी घटनाओं की FIR भी नहीं होती थी, साक्ष्य मिटा दिए जाते थे, जांच होती नहीं थी. तो जितने मसले आप बता रही हैं ये सब उसी दौर के मसले हैं और उनके साथ यही हुआ है. उसमें विधिक और कानूनी प्रक्रिया क्या इख्तियार की जानी चाहिए वो हम विचार कर रहे हैं. और ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में दो ही बात आती है और मैं मानता हूं कि दुनिया के दो सबसे बड़े आविष्कार हुए, ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और विज्ञान के क्षेत्र में पहिया, व्हील. तो रूल ऑफ लॉ किसी हाल में देश में कायम रहना चाहिए और जम्मू कश्मीर में भी रूल ऑफ लॉ कायम हो रहा है, काफी हद तक हो गया है. इसे पूरी तरह हम लागू करेंगे और ये शुरुआत हुई है, यात्रा लंबी है, लेकिन हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे. Life imprisonment for hardcore terrorist Yasin Malik has generated new ray of hope for displaced Kashmiri Hindus who for the last 32 years had been waiting for justice. All these years, it was really painful for them to see butcher of Kashmiri Pandits masquerading as Messiah of peace while they continued to suffer in homes away from homes. Previous government not only treated him like VVIP, but they almost projected him as a youth icon, allowing him to lead luxurious lifestyle.
Now Kashmiri Hindus want the action to be initiated against lobby, and there should be crackdown on ecosystem of terror that was providing oxygen to killers like Malik. मेरे साथ इस समय डॉक्टर सुषमा शाला हैं। इनके पिताजी को 90 के दशक में मार दिया गया था। इनका सिर्फ एक ही कसूर था कि अपने देश की और रक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे। वो पुलिसकर्मी थे। आज जब ये 32 साल के बाद यासीन मलिक को सज़ा मिलती है, तो आप कैसे देखते हैं? कोई उम्मीद जगती है आपको कि आगे ठीक होगा? बहुत बड़ी उम्मीद जगती है, क्योंकि अगर वो एक केस में कन्विक्ट होते हैं तो बाकी केसेस में भी होने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। तो आई थिंक ये जो हम जितनी भी फैमिलीज़ है विक्टिम्स की, उनके लिए जस्टिस का डोर खुल गया है इससे। देखिए पिछले सरकारों में क्या उसको कैसा उसके साथ मतलब उसको कैसा सलूक किया जाता था। ही वॉज गिवन द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। अभी वो सब नहीं है। तो एक कॉमन इंसान के लिए होप जगी है कि कहीं ना कहीं जस्टिस प्रिवेल करेगा। दो डिले तो हो गया है पर डिनाई नहीं होगा, मुझे लगता है। मेरे साथ इस समय विकास रहना चाहिए। इनके पिताजी की हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कर दी थी 1997 में, जब वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे। उस समय भी वही सवाल था कि उनका क्या कसूर था। आज भी वही सवाल पैदा होता है कि राहुल भट्ट का क्या कसूर था या अमरीन का क्या कसूर था। लेकिन मेरा सवाल इस समय आपसे है कि एक दरगाह कमेटी अजमेर की जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि इससे रिलीजियस चश्मे से नहीं देखना चाहिए जो यासीन मलिक की सज़ा है, क्योंकि उन्हें लॉ ने अपने हिसाब से सज़ा दी गई है। जी, मैं ये एक्चुअली वेलकम करना चाहता हूँ। ये दरगाह कमेटी ने अजमेर ने जो डिसीजन लिया है और ये स्टेटमेंट दिया है, बिकॉज़ ये उनके क्राइम्स जो थे वो इतने हीनियस हैं, तो उसकी सज़ा आज उनको मिली है और ये भी अधूरी सज़ा है, क्योंकि एक्चुअली तो उनको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। जो मेरे को लगता है कि जो जुलाई में केस है रवि खन्ना जी का, उसमें कोर्ट वो कॉग्निजेंस लेगी और उनको डेथ सेंटेंस देगी। बट मेरा कहना ये भी है, देखिए कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं और डेड बॉडीज़। Farooq Ahmed Dar or Bitta Karate is one of the accused in the terror funding case and is also behind bars. He was also among the principal architects of the Kashmiri Hindu pogrom of the 1990s, even having confessed on camera of murder. Yasin Malik's involvement too in the pogrom needs to be thoroughly investigated. The onus is also on the central government to constitute a commission of inquiry to look into what happened more than 3 decades ago. Justice in this specific case of terror funding for now has been done, but there is still a long way to go before the perpetrators that have kept Kashmir boiling all these years are brought to book with the full might of the law. The tragedy is that targeted killings in Jammu and Kashmir have continued. Hindus and Sikhs, Kashmiri policemen, army personnel, and most recently Amreen Bhatt, a television and social media personality, was gunned down. कल आया ये 7:45 बजे 2 बंदे। मेरे छोटा लड़का उधर 11 साल का दरवाजे पर, उसने दरवाज़ा खोला, फिर उसने बोला अमीना कहाँ है? उसने बोला घर में है, अंदर है। उसने बोला उसको आवाज़ मारो बाहर निकलने की। आए आने कोई 2 बंदे आए बाहर, ये तुमको ढूंढता है। आया तो बैठा, उसने बोला क्या बात है? तो शूटिंग 2-3 दिन है हमारे साथ। उसने बोला वापस हम नहीं आऊँगा। तो क्यों? हम जान पहचान वाला नहीं है, तुमसे नहीं आऊँगा मैं। उसने पिस्टल निकाला तो शूट कर दिया। ये अमरीन जो भट्ट है उसका घर है यहाँ पे। यहीं पे पुलिस के मुताबिक जो है लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंट आए और पहले यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया, जो मेन डोर है यहाँ पे घर का। वहाँ से जो उनके 9 साल के भतीजे हैं वो निकल आए बाहर और उन्हें बताया गया कि एक शूट के लिए जो है उन्हें अमरीना को बुलाए, उनको बडगाम जाना है। यहाँ पे जो है पिस्टल से उन पे गोलियां चलाई गई है और फिर जो फैमिली है उन्होंने जो है डेड बॉडी अमरीना की जो है वो इस रूम में जो है जा कर के रखी है। यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि अमरीना जो थी वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी और कई बार प्रशासन ने उन्हें जो है अवार्ड से नवाजा। ये एक अवार्ड जो है यहाँ पे उसे मिला है। फिर जो है इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस में अमरीना पार्टिसिपेट कर रही थी, सोशल मीडिया पे अपने छोटे से छोटे वीडियोस डालती थी, लोगों को हंसाती थी, थिएटर में काम कर रही थी, टेलीविज़न के साथ जुड़ी थी, दूरदर्शन के साथ जुड़ी थी। और जो फैमिली है यहाँ पे ख़ासतौर पर उनके पिता है, उनकी
की जो अगर आप बहन भी देखेंगे यहाँ पे तो लगातार मातम में हैं और काफ़ी दुख में हैं और बात भी नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं इस समय कि जो इनके साथ हुआ है। 35 साल की थी अमरीना और काफ़ी सपोर्ट अपनी फैमिली को कर रही थी, टेलीविज़न के साथ जुड़ी थी, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी एक तरह से कहेंगे वहाँ पे भी वो अपने घर के लिए काम कर रहे थे। The likes of Mehbooba Mufti and the Abdullahs, part of the so-called mainstream in Jammu and Kashmir, have condemned these killings, but they were also sympathetic to the Yasin Maliks of the valley. More to be blamed are Kashmir-centric netas who continue to eulogize and glorify terrorists like Yasin Malik. They not only legitimize them, but try to project these villains as stakeholders. While judge was pronouncing verdict against Yasin Malik, Mehbooba Mufti, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, was crying hoarse, charging India of using muscular policy against Kashmiris. Question each and every Indian wants to ask Mehbooba Mufti why she is shedding tears for terrorists and not speaking for victims. This dirty politics hurts everyone. The virtual abrogation of Article 370, the doing away of Article 35A were landmark steps. But the time has come now to also ask what's being done on the ground to make the valley more secure for all, because the guns of the terrorists have not stopped firing.